everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to do introduction to India's chapter. तो अभी तक ये नया चैप्टर है, अभी तक ऐसे तो टेस्ट नहीं करा इसमें से, तो वी कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस इन May 2025 attempt. So if at all a question comes from this, we should be in a position to get full marks. अच्छे खासे क्वेश्चंस भी है ICAI के मॉड्यूल में, तो we are going to do all the questions in this along with the concepts, right? So let's get started. इसमें ना दो phases है. See, phase 1 starts in 1st April 2016, phase 2 in 1st April 2017. Remember the dates, ठीक है? डेट्स का पूरा गेम है इसमें, ठीक है? फर्स्ट डेट इज ऑन 1st April 2016, परफेक्ट. सेकेंड फेज इज ऑन 1st April 2017. तो ऑन 1st April 2016 दे हैव गिवन सर्टन क्राइटेरियाज. ओके, अगर वो क्राइटेरिया मीट हो गया तो फॉर सर्टन कंपनीज इंड एस इज अप्लीकेबल, ठीक है? और 2017 में थोड़े चेंजेस करे, फिर से नया क्राइटेरियाज लेके आ गया और बोले कि फॉर दीज कंपनीज इंड एस इज अप्लीकेबल, ठीक है? नाउ वी विल सी व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट इज डिटरमाइंड इन फेज 1. ओके, सो फेज 1 स्टार्ट्स हियर 2016. ओके, उसमें बोले कि अगर आपका कंपनी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, एनी कंपनी, उसका टर्नओवर, उसका नेटवर्थ, इफ इट इज़ मोर देन और इक्वल्स टू 500 crores, फॉर दैट इंड एस इज अप्लीकेबल. परफेक्ट. 2017 में बोले कि एनी लिस्टेड कंपनी, पहले क्या था, लिस्टेड और अनलिस्टेड इफ इट्स टर्नओवर इज मोर देन 500 crores. 2017 में बोले कि ऑल लिस्टेड कंपनीज इंड एस इज अप्लीकेबल. फॉर अनलिस्टेड कंपनीज बोले कि आपका टर्नओवर 250 crores से ज़्यादा है तो इट इज़ अप्लीकेबल. यहाँ पे देखें तो पहले टर्नओवर था 500 crores फॉर अनलिस्टेड, अभी कर दिए 250, ठीक है? सो 250 to 500 एक स्लैब दे दिया, ठीक है? दैट फॉल्स इन फेज 2. ओवर एंड अबव 500 एनीवेज कवर्ड हियर इन फेज 1. So okay, so again I'm repeating, all listed companies or unlisted companies, if its net worth is more than 500 crores, more than or equal to 500 crores, phase 1 में 1st April 2016 को Ind AS is applicable to it. Now phase 2 starts in 1st April 2017. वहाँ बोले कि all listed companies irrespective of its net worth. For unlisted companies, if the net worth is about 250 crores, then Ind AS is applicable, ठीक है? अभी ये दोनों को if at all Ind AS is made applicable for certain company, then Ind AS is also applicable for its holding company, subsidiary company, joint ventures, associates. Perfect, no? Clear. I hope this is clear. So यहाँ पे date remember करना है अपने को. 2016 is the date, 2017 is the date. Year end नहीं, year beginning. 1/4/2016 and 1/4/2017 is the date. Perfect. ठीक है. नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए कौन सा डेट देखना चाहिए अपने को? सी, यू आर स्टैंडिंग ऑन 1st April 2016 और तुम देख रहे हो कि नेटवर्थ 500 crore से ज़्यादा है कि नहीं. तो प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का देखोगे ना, तो प्रीवियस ईयर मतलब 31 March 2016, राइट? प्रीवियस ईयर का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे, उसमें से नेटवर्थ देखोगे वेदर इट इज़ मोर देन 500 crores और नॉट. नो, बट द स्टैंडर्ड सेज गो एंड सी 31 March 2014 का, ठीक है? 31 March 2014 का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लियो और नेटवर्थ कैलकुलेट करो. इफ़ इट इज़ कमिंग मोर देन 500 crores, देन मेक इट अप्लीकेबल ऑन 1/4/2016. परफेक्ट, ठीक है? नाउ वन मोर कॉमन सेंस वाली बात बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे. इफ़ एट ऑल यू नो इट इज़ मेड अप्लीकेबल, इफ़ एट ऑल फॉर एनी कंपनी इंड एस इज़ मेड अप्लीकेबल, ठीक है? देन when you are preparing financial statements along with the current year, you will also prepare previous years का figures also. You will also plot previous year figures, right? So उसका मतलब क्या, previous year भी आप Ind AS के हिसाब से prepare कर रहे हो. So that is a common sense thing, and I am not going to put all those dates because it will confuse you. So all you have to remember is, in case for any company Ind AS is made applicable, then you have to prepare along with current year even previous year figures also. 2016 का अगर अप्लाई हो गया तो 15-16 इज इट्स प्रीवियस ईयर, राइट? सो यू हैव टू प्रिपेयर 15-16 का भी एज पर इंड AS एंड शो द कंपैरेटिव फाइनेंशियल फिगर्स. परफेक्ट. चलो अभी क्या देखेंगे नेक्स्ट. नेटवर्थ भी 2014 का देखना चाहिए, नॉट द प्रीवियस ईयर फिगर्स. परफेक्ट. वंस इंड AS इज अप्लीकेबल, इट इज़ ऑलवेज अप्लीकेबल, ठीक है? Now let's do an illustration. This is actually there in the ICAI module, illustration 3. Company B
इज़ एन अनलिस्टेड कंपनी, उसका नेटवर्थ है इज़ हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ 600 crores, ठीक है, आज ऑन 31st March 2014. Perfect. 600 crores as on 31st March 2014. मतलब it is having more than 500 crores. See, this is the one we are talking about. ठीक है, net worth is more than 500 crores. 600 crores का मतलब. So it is phase 1 is applicable to it. So it has to prepare its financial statements as per IND AS from 1st April 2016. बोलता है कि next year में ना due to some losses its net worth has fallen to 400 crores. ठीक है, तो as on 31st March 2015, as on 1st April 2016 को इंडेस इज मेड अप्लीकेबल, बट क्राइटेरिया फ्रॉम वी विल चेक फ्रॉम 31st March 2014 को इट इज़ अप्लीकेबल 600 crores, अच्छा है, यू नो इट इज़ मीटिंग द क्राइटेरिया, बट इन 2015 इट इज़ फॉलिंग. ठीक है, तो स्टैंडर्ड बोलता है यू नो वंस इंडेस इज अप्लीकेबल नो इट इज़ ऑलवेज अप्लीकेबल, राइट. सो 2014 में इट हैज़ बिकम अप्लीकेबल. जस्ट बिकॉज इन 2015 बिकॉज ऑफ सम लॉसेस उसका नेटवर्थ गिर रहा है, इट डज नॉट मीन दैट यू विल नॉट प्रिपेयर एज पर इंडेस. यू विल हैव टू प्रिपेयर एज पर इंडेस इज व्हाट द स्टैंडर्ड सेज. ओके, सी नेटवर्थ क्राइटेरिया वंस मेट ऑलवेज अप्लीकेबल. So you will also prepare comparative financial statements. Perfect. No, I hope it is making some sense. So illustration 4 again. This is also there in the ICAI material. And यहाँ पे देखे तो ना कंपनी भी उसका नेटवर्थ है 400 crores as on 31st March 2014. Okay, so it is not meeting the criteria. As on 31st March 2014 उसका नेटवर्थ is not more than 500 crores. I'm talking about this one. ठीक है, लिस्टेड और अनलिस्टेड उसका नेटवर्थ रहना मोर देन 500 crores, राइट. तो उसका है 400 crores, उसका है 400 crores. वेयर इज द क्वेश्चन. या और नेक्स्ट ईयर में नेटवर्थ वॉज 600 crores एज ऑन 31st March 2015. 2015 को उसका नेटवर्थ हो गया, राइट. सो इफ एट ऑल ए कंपनी उसका if it does not meet the criteria as on 2014, तो that company will assess every year उसका नेटवर्थ क्या है. every year वो assess करेगा and then it will see whether it is meeting the criteria or not. and again in 2015 if you see उसका नेटवर्थ हो गया more than 500 crores, it is 600 मतलब it is more than 500. तो phase 1 itself is applicable to it. तो on 1st April 2016 it has to prepare its financial statements as per IND AS. ओके, तो 2015 में वो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करा, मतलब 15-16 में इट विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर में इट विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंड AS. क्लियर नो, सिंस इट इज सेटिस्फाइंग इन द ईयर 14-15, 15-16 में इट विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंड AS. चलो, अभी तक तो बहुत पढ़ लिए नेटवर्थ. नाउ वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट द नेटवर्थ. इन सिंपल टर्म्स आई एम टेलिंग यू, नेटवर्थ इज़ नथिंग बट तुम्हारा इक्विटी एंड रिजर्व्स रहता है ना, वो दोनों को ऐड करे तो तुम्हारा नेटवर्क आ जाना चाहिए. ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट द स्टैंडर्ड इज सेइंग. पेड अप शेयर कैपिटल डन. लेट्स गो फॉर ब्लू. पेड अप शेयर कैपिटल डन. सिक्योरिटीज़ प्रीमियम एडेड. ऑल रिजर्व्स को भी ऐड कर दो. बोल रहा है एक्सेप्ट फॉर रिवैल्यूएशन रिजर्व. ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व को हटा दो या उसको ऐड ना करो, उसको इंक्लूड ना करो. एंड देन ये ऑल दिस थिंग्स नो यू मस्ट हैव सीन दिस विल बी इन द एसेट साइड. ऐसे यू नो डिफर्ड एक्सपेंडिचर, accumulated losses, accumulated losses, miscellaneous expenditure, depreciation, write back of depreciation. All this if they are there on the asset side, remove all this. And then जो balance आता है ना, that is your net worth. तो basically your equity and reserves itself is your net worth. तो ये सब याद रखना एग्जाम हॉल में, और definitely 1 or 2 times you have to practice, then only you will be able to remember in the exam hall. अभी पूरा easy लगता, but वो 3 घंटे में याद रहना, that is more important. That's the whole game. So this is an illustration which is there in the ICAI material only. Okay, तो यहाँ पे बैलेंस शीट दे दिया और बोल रहा है कि दिस इज़ अ लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31st
मार्च 2024 का डेटा दिए अपने को, एंड देन दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट द नेटवर्थ. ओके, नाउ वी विल टेक इक्विटी, we will take securities premium, we will take general reserve, we will not consider this, we will take P&L, we will remove this. Okay, we will remove miscellaneous expenditure and rest all we won't consider. Okay, equity plus reserves is your net worth. So that is what exactly is happening. But एक adjustment है उसमें से reserves को निकाल देना और कोई asset side में ऐसा कुछ balance दिखाए ना उसको minus कर देना बस. So exactly we did the same thing. Equity 200 securities premium, general reserve, and then revaluation reserve को we did not take, and then P&L ये जो 80 है ना उसको माइनस कर दिया, we got 505. So this is 31st March 2014 and net worth is 505. Okay, it is more than 500 crores. So phase 1 is applicable. See, I'll go to the diagram. See, 500 crores phase 1. So phase 1 is applicable to it. Since any listed or unlisted company, if its net worth is more than 500 crores, then as on 1st April 2016 को it has to prepare its books of accounts as per Ind AS. So अब यहाँ पे अपने सोल्यूशन में ना 500 आ गया, 505 आ गया, तो Ind AS is applicable and you should prepare from this date. ये डेटा है 31st March 2014 का, बट अपन प्रिपेयर कर रहे हैं 1st April 2016 को. So when you are preparing for 16-17, this is 16-17 को we will prepare. At the same time you will show 15-16 figures also, comparative figures. I hope now it is clear. चलो, बोलता है instead of P&L 75, यहाँ पे P&L 75 था ना, so ये जो P&L 75 है ना, बोल रहा अगर P&L if it is on the asset side and that to 375, forget about this now. P&L 375 यहाँ पे है, तो तुम क्या करोगे? सेम वैसे ही इक्विटी रिजर्व्स एंड से जनरल प्रीमियम, इक्विटी रिजर्व्स एंड जनरल रिजर्व्स तीनों ले लिया. P&L को ना नीचे 375 यहाँ से डिडक्ट करना रहता, बिकॉज इट इज़ ऑन द एसेट साइड, इट इज़ अ डेबिट बैलेंस. ओके, सो दैट बैलेंस इफ यू रिमूव यू आर गेटिंग 55. So definitely it is less than 500 crores, but it is a listed company. It is a listed company. Now, even though irrespective of its net worth, Ind AS will be applicable from 1st April 2017. I'll go to the diagram first. ठीक है, this is the diagram. So 2017 को क्या बोल रहे हैं? Every listed company, no, Ind AS is applicable irrespective of its net worth. So because of this condition, Ind AS will be applicable to it. I am hope. See, यहाँ पे listed entity दे दिया, तो irrespective of its net worth, you should say, even though it is 55, irrespective of the net worth, Ind AS is applicable for listed entities. I hope now everything is clear. I hope you know connecting all the dots. Let's go. Illustration 5, this is also there in the book. You know, all these are all very, very good examples. I'm telling you, definitely a question can be asked at any point of time, or MCQs can also be asked. By now you must have figured it out. तो बहुत सारे ट्विस्ट है इसमें, you know, dates, numbers, बहुत सारा ध्यान देना पड़ता है, कन्फ्यूज़न होने के चांसेस बहुत है. 2 to 3 टाइम्स रिविजन करना ही पड़ता है. चलो, बोलता इलिस्ट्रेशन 5, पेरेंट कंपनी ए है, इट्स एन अनलिस्टेड कंपनी, उसका सब्सिडरी कंपनी बी है, उसका सब्सिडरी कंपनी सी है. नाउ इफ़ यू सी द नेटवर्थ, नो, ओनली फॉर कंपनी बी इट्स इज मोर देन 500 crores. मतलब कंपनी बी को Ind AS इज अप्लीकेबल नाउ, राइट? अनलिस्टेड कंपनी है, उसका टर्नओवर है मोर देन 500 crores, तो फेज़ 1 में इट इज़ अप्लीकेबल. तो व्हाट द स्टैंडर्ड सेज इज, if for a company Ind AS is applicable, then Ind AS is also applicable for its holding company and its subsidiary company also, not just this. उसका होल्डिंग कंपनी को भी Ind AS अप्लाई होता, उसका सब्सिडरी कंपनी को भी Ind AS अप्लीकेबल होता, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेटवर्थ. इसको हो गया तो सबका हो गया. सेम थिंग आई रोट हियर ऑल्सो, इट वुड बी अप्लीकेबल फॉर होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी. परफेक्ट. नाउ इलिस्ट्रेशन 6, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम योर मॉड्यूल ओनली. यहाँ पे चार्ट को समझना पहले. कंपनी बी है, उसके 2 सब्सिडरीज, ठीक है, कंपनी ई, कंपनी एच, 2 सब्सिडरीज है, और कंपनी एच का भी कंपनी एफ सब्सिडरी, एंड देन दिस इज इट्स एसोसिएट कंपनी ई का.
कंपनी एच का एक सब्सिडरी है कंपनी आई. नाउ बोलता है net worth of company E is 300 crores. Now use your brain and tell me an unlisted company. This is an unlisted company. Perfect. An unlisted company जिसका turnover is 300 crores. When Ind AS is applicable, pause, think and tell me. Let's go. So I'll take you back to the chart. See, if you see the chart now, all unlisted companies 250 से लेके 500x slab है. ठीक है. फर्स्ट फेज में ना इफ ओनली इट इज़ अप्लीकेबल वेदर इट इज़ अ लिस्टेड और अनलिस्टेड इफ इट इज़ मोर देन 500 crores इंड एस इज अप्लीकेबल. बट 2017 में बाइफिकेशन आ गया. बोलता फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी इट इज़ अप्लीकेबल रिस्पेक्ट ऑफ इट्स नेटवर्क, बट फॉर अनलिस्टेड एंटिटीज इट इज़ अप्लीकेबल ओनली इफ इट इज़ मोर देन 250 crores. यहाँ पे 500 से लेके 250 तक आ गया. अभी 250 से ऊपर है, 250 से ऊपर है तो इट फॉल्स इन 2017. अगर 250 से भी ज़्यादा है, मतलब इफ़ इट इज़ मोर देन 500 देन इट विल फॉल इन दिस कैटेगरी ओनली. परफेक्ट नो. सो दैट इज़ द रीज़न दे गेव दिस पर्टिकुलर स्लैब इन 2017, 250 से लेकर 500 करके. अबव 500 इट विल फॉल इन दिस फेज 1 ओनली. 250 से 500 इट विल फॉल अंडर दिस 2017 फेज 2. नाउ इन आर क्वेश्चन आर नेटवर्थ इज 300, so it falls in phase 2. So that will fall in phase 2 if you see 300 crores. Okay, now if you see, net worth of company E is 300 crores, right? And all the other companies is below 250. Now we will see where is company E. He's talking about this company. इसका नेटवर्थ इज मोर देन 300 crores बोला है. तो इंड एस इज अप्लीकेबल फ्रॉम 1 April 2017 phase 2. Perfect no? Perfect. So once it is applicable for company E, it will also be applicable for its holding company, its subsidiary company, its associate company. Okay, but will it be applicable to its fellow subsidiary? The standard says no. It will not be applicable for its fellow subsidiary company or उसका subsidiary, right? It will only be applicable to its holding, to its these two subsidiary and associate. Clear? ठीक. Now we will go one step ahead. तो कंपनी बी को ईयर एंड में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना रहता एज पर इंड एस. नाउ इफ इट इज़ अप्लीकेबल फॉर दिस, इट इज़ ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर दिस. नो. परफेक्ट. तो व्हेन इट हैज़ टू इंक्लूड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ दीज टू एंटिटीज ऑल्सो, सो इट कैन रिक्वेस्ट कंपनी एच एंड आई टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंड एस, और कंपनी एच एंड आई कैन वॉलेंटरली ऑप्ट फॉर इंड एस, राइट? Yeah, whether it is voluntarily or mandatorily, once applicable, always applicable. Okay, so this company H and I can go for voluntary scheme. Okay, they can voluntarily apply. That is what I wrote, they can voluntarily opt. Parent company has to prepare its consolidated financial statements. See, it is not applicable to its fellow subsidiary. Perfect. इतना लिख के आना राइट चाहिए एग्जाम हॉल में. चलो, Ind AS is applicable only for companies which are incorporated in India under Companies Act. Okay, for companies, अगर मेरा होल्डिंग कंपनी इंडिया में है, 2 सब्सिडरीज मेरे फॉरेन कंट्रीज में है, those 2 companies no, they are not required to prepare their financial statements as per Ind AS. But Indian company, when it's preparing its consolidated financial statements, it has to prepare as per Ind AS. Clear? Perfect. So that is the same thing I wrote here. Now the last one is NBFC. सी डेट्स 1 April 2016 था ऊपर, फेज 2 का 1 April 2017 था. नाउ 1 April 2018 आ गया एंड देन 1 April 2019. बाकी सब सेम, जस्ट दिस डेट्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर एनबीएफसी. नो, इट इज़ 2018 एंड 2019 सेम. 2018 को सर्टन क्राइटेरिया दिए एंड देन 1 ईयर में 2019 को दे हैव मॉडिफाइड दोज क्राइटेरिया इज सेम. सी एनबीएफसी लिस्टेड अनलिस्टेड, उसका नेटवर्थ इफ इट इज़ मोर देन 500 crores देन इट विल फॉल अंडर फेज 1. एंड 2019 में एवरी लिस्टेड एनबीएफसी रिस्पेक्ट ऑफ इट्स क्राइटेरिया, रिस्पेक्ट ऑफ इट्स नेटवर्थ, एनबीएफसी को इंड एस इज अप्लीकेबल. एंड देन एनबीएफसी अगर अनलिस्टेड है तो यू हैव टू सी इफ इट्स नेटवर्थ इज मोर देन 250 crores. सेम लाइक नॉर्मल कंपनीज दैट वी हैव डन. बस यहाँ पे कट ऑफ डेट 31 March 2016 का देखना, सेम लाइक 2 years पहले का. इवन देयर ऑल्सो वी सॉ कट ऑफ डेट इज ऑन 31 March 2014 एंड वी आर अप्लाइंग इंड एस ऑन 1 April 2016.
Here we are applying Ind AS on 1st April 2018 and cutoff date is of 31st March 2016. I hope it is clear. If this video was helpful, please do subscribe and show some likes. That will motivate me a lot. And thank you all so much. See you all in another video. Please do subscribe.